type of gene mutations, which also known as base pair substitutions. Point mutations, most commonly a type of gene mutation. These are going to change in a single nucleotide base pairs. सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स में चेंज होता है ड्यू टू दिस पॉइंट म्यूटेशन. A single nucleotide also can be altered due to this point mutation. And here you can summarize the difference between a nucleotide and a nucleotide base pair, right? A nucleotide का मतलब क्या होता है? Either it may be a adenine हो सकता है, guanine हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, राइट? लेकिन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का मतलब it should be a either adenine guanine or cytosine thymine. That's it. So that is the difference. Clear? Now these point mutations can be categorized into three types: silent mutation, missense mutation, nonsense, जो हमने अभी लिया. तो एक एक पढ़ लेते हैं, ठीक है? First one, first point mutation, that is the silent mutation. The change in one codon for an amino acid into another codon. So due to a point mutation, a change occurs in one codon for a particular amino acid and alters into the another codon for the same amino acid, right? So silent mutations are also referred to as synonymous mutations. In this diagram, which is in the right one, you can see the GAA, which codes for glutamine amino acid, is going to change. तो यहाँ पर अल्ट्रेशन आ गया थर्ड उबल बेस पेयर में, दैट इज एडेनाइन इज अल्टर्ड और पॉइंट म्यूटेशन हो गया वहां पर. ड्यू टू दैट पॉइंट म्यूटेशन नाउ हियर एडिशन ऑफ गुआनिन इज देयर and now it is became a GAG. But we know that GAA and GAG, both these codons are going to code for the same amino acid, and that is the glutamic acid. Hence there will be no effect on a protein due to the change. Hence कोई भी इफेक्ट नहीं होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर फंक्शन पर, इसलिए उसे बोला जाता है साइलेंट म्यूटेशन. ये म्यूटेशन तो करते हैं लेकिन वहां पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, प्रोटीन के फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए उसे बोला गया साइलेंट म्यूटेशन. क्लियर? साइलेंट म्यूटेशन. यस सर. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. मिसेंस म्यूटेशन. So the name itself suggests that this is the misunderstanding, hence missense mutation. So the codon for one amino acid is changed into a codon for another amino acid. So for example कि कोई codon था which is going to for coding for a particular one amino acid, and due to mutation that is changed and now it is going to code for another amino acid. Hence missense mutations are sometimes referred to as non-synonymous mutations. Non-synonymous mutations. तो यहां पर आप एग्जांपल में देख सकते हो, this 3CAT is going to code for histidine amino acid, but now they are going to alter, change the CCT. अगर यहां पर आता है, यहां से histidine आप देख सकते हो, now it is going for a proline amino acid. So due to a single nucleotide change, that is point mutation, one amino acid is changed into another amino acid, and that type of mutation is known as missense mutation. And due to this missense mutation, protein structure and function is going to be altered or changed. Hence these also called as non-synonymous mutations. Clear? Now next, third type of point mutation includes nonsense mutation. Nonsense codons, as we know that
to whom we call a nonsense codon? Fatafat, I want the answer. Stop the replication. Rocker. ओके, वैष्णवी का कहना है कि भाई विच स्टॉप्स द रेप्लिकेशन. ओके, अनदर वन. और कोई? विच आर द नॉनसेंस कोडॉन्स? सो द उसका कोडॉन्स. कोई मीनिंग नहीं होता है. ओके, पल्लवी का कहना है कि भाई उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, तब उसे हम नॉनसेंस बोलते हैं. ओके, और? So it signals the termination of the translation. Okay, they are involved in the termination of transcription. That is the nonsense bar. Okay, another one. Anybody? So in simple language, nonsense codons are those codons which code for stop codons. And we know the stop codons in a genetic code. There are three codons which are representing the stop codons as UAA, UAG, and UGA. So whenever the codon for an amino acid is changed into a stop codon, so कोई भी अमाइनो एसिड वाला कोडॉन हो और वो कोडॉन अगर कन्वर्ट हो जाता है stop codon में, then that type of mutation is referred as nonsense mutation. And from that stop codon, there will be no protein further elongation. Hence, these are called nonsense mutations. And they are going to truncate, or they are going to terminate from that place the further protein structure and function. Now clear? Nonsense mutation means one amino, which is the functional amino acid, is converted into the stop codon or non-coding amino acid codon, that is stop codons. तब उसे बोला जाता है nonsense mutation. Are you understanding? So here we complete with these 3 point mutations: silent mutation, missense mutation, and nonsense mutation. Are you understanding? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And now we will start with this frame shift mutations. Frame shift mutations. So mention in your notebook frame shift mutation. This type of mutations occurs when the addition or loss of DNA base changes a gene's reading frame. So in this type of mutations, a protein frame or protein structure is going to be changed due to either addition or deletion of base pairs. Hence, a reading frame which consists of 3 bases and going to code for 1 amino acid. So as we know that 3 bases of nucleotides concludes 1 codon, and 1 codon is specific to represent a 1 amino acid. So that is the universal genetic code rule, that 3 nucleotides are going to form a 1 codon, and 1 codon is going to code for 1 amino acid. Now in this frame shift mutation, they are going to shift the grouping of these bases and changes the code for amino acids. The resulting protein is usually non-functional. So due to change in the protein frame, they are going to become a non-functional. So these frame shift mutations include insertion or deletion. So due to insertion or due to a deletion, the frame shift can occur in a particular protein. So this diagram can give you a frame shift mutation. So यहाँ पर आप देख सकते हो CAT is going to code for histidine, but due to insertion of a thymine
frame is going to shift or alters, and now a frame shift of one base results in the abnormal amino acid sequence. So that type of mutations are now called as frame shift mutations. Yes, Pooja, any doubt? सर पूजा। फ्रेंडशिप नहीं समझ सर फ्रेंडशिप म्यूटेशन नहीं नहीं। समझ में आया। नहीं समझा है? हाँ ठीक सर है, नहीं अब समझा। समझ में आएगा। सो नाउ इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज वन सेंटेंस। एक सेंटेंस है जहां पर आपको दिखाई दे रहा है राम हैज रेड कैप, राइट? तो जो 3 लेटर्स है RAM इज कंसिडर कर दीजिए कि भाई ये कोई न्यूक्लियोटाइड्स है। मान लो कि ACT है या GAG है, तो दैट GAG इज गोइंग टू फॉर कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड लाइक ग्लूटामिक एसिड, बरोबर है? So same way, but this HAS also going to code for one amino acid, red is going to code for one amino acid, cap is going to code for one amino acid. And if we read this frame, Ram has red cap, तो उसका एक मीनिंग है, राइट? उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है। तो मान लो कि ये कोई प्रोटीन की फ्रेम है। नाउ कंसिडर दिस एज अ प्रोटीन फ्रेम। नाउ ड्यू टू इंसर्शन, अब इंसर्शन की वजह से उस फ्रेम में क्या चेंज होता है वो देख लेते हैं, ठीक है? इफ वी इंसर्ट अ लेटर बी इन बिटवीन HAS, दैट इज द हैज एंड रेड, तो इन दोनों के बीच में अभी इंसर्शन ऑफ दिस सिंगल न्यूक्लियोटाइड बी हुआ है। नाउ वी कैन रीअरेंज द स्टेटमेंट एंड नाउ इट विल बी बिकम एज, यहां पर आप देख सकते हो राम हैज BREDCAP। Now, is this sentence have any meaning? अब इसका कोई मीनिंग है पूजा? नो सर, नो सर। So that is the change in frame. Hence, it is called as a frame shift mutation. Are you understanding? यस सर, अभी So समझ में अब क्या हुआ है? पूरी प्रोटीन की फ्रेम चेंज हो गई है ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सिमिलरली इफ वी इंसर्ट 2 लेटर्स एट द सेम प्लेस, मान लो कि हमने बी के आगे आई अभी इंसर्ट किया है या न्यूक्लियोटाइड इंसर्शन हुआ है आई का। नाउ द सेंटेंस ऑफ द फ्रेम विल बी इंक्लूडेड as